Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. These days, we are doing Differential Calculus B.Sc. Part first. All these concepts, whatever I have taught, very important with respect to pedal equation. We will discuss this part later on. Yesterday, we defined the angle between the radius vector and tangent when the equation is given in polar form. This is the curve. Tangent. Initial line. This angle is psi. You have to remember all the things. This point is P, theta, and this point is joined to this. O, that is pole. This is R and this is theta. And we know that this angle is phi. So there are two results. Remember, one is tan psi, that is dy by dx, and tan phi. Tan phi is R d theta by dr, and tan theta, that is y upon x. Theta, vector angle, r, radius vector, phi, angle between the radius vector and the tangent. This is the tangent, Sparshrekha. This tangent is at point P, that is r theta, and this is the curve, that is polar curve. Equation is in terms of r and theta. Okay, so this you know that these three angles are very important, and the relationship, this psi equals to theta plus phi. You know that psi equals to theta plus phi, and these are the values. Tan psi, slope of the tangent, that is dy by dx. Tan phi, yesterday we defined r d theta by dr, and tan theta, that is y upon x. Now let us consider one question on this. Prove that tan phi equals x dy by dx minus y upon x plus y dy by dx. Now remember, this is the relationship in the angles, psi equals to theta plus phi. So we begin with this, and these are the values. So left hand side, this is tan phi. Tan, what is phi? Phi will be psi minus theta. Okay. Left hand side is tan phi. This is phi means psi minus theta. From this diagram you can see this. Then we apply the formula. Tan psi minus tan theta upon 1 plus tan psi tan theta. Trigonometrical results we can use. Tan psi, here it is dy by dx, minus tan theta y upon x, 1 plus dy by dx y upon x. Because
it is in terms of sine theta. So here you can see this is sine and this is theta. So this is in terms of dy by dx and this is in terms of y upon x. Now we simplify. We multiply the whole result by x. So it is x into dy by dx minus y. अंश और हर को x से गुणा करने पर ये आप एलसीएम ले सकते हो. दिस इज x प्लस y dy by dx. दिस इज right hand side. Okay, so sometimes this type of question is asked, so you just remember what is given. You just look at left hand side as well as right hand side. So this angle is phi and we people know that the relationship in phi theta psi is this one. So we can use this left hand side and we can simplify this one. It is not necessary to use left hand side. You can consider right hand side and we can proceed. So just see the alternative. It is up to you how to proceed this, okay? Alternative. If we consider right hand side, then x, then this is dy by dx minus y, x plus y dy by dx, and we people know this result. So we divide this one by x. So let us say the right hand side is x dy by dx minus y upon x plus y dy by dx. Dividing numerator and denominator both by x. अंश तथा हर को x से भाग देने पर, so this is dy by dx minus y upon x is 1 plus y upon x into dy by dx. Equals dy by dx is tan psi. So here it is tan psi minus y upon x, that is tan theta, 1 plus tan theta tan psi. This is tan psi minus tan theta upon 1 plus tan psi into tan theta. Very important result of trigonometry. People know that this is tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. So this is tan psi minus theta. And this is tan psi minus theta. This is psi. So it is phi and this is left hand side. Okay, so both way we can prove this result. You take left hand side and simplify, or you take right hand side then simplify. So it is up to you. But you remember this basic part, this particular diagram, these angles and these three results are very important. Okay. Now we come to the next part of this. We have done how to find angle between two curves, but when curves be given in Cartesian. Now if we consider curves are given in polar form, then how to simplify? Okay, so let us see.
Angle of intersection of two curves. Angle of intersection of two curves, or I say angle between two curves. दो वक्रों के बीच का कोण. Angle between two curves, that is called angle of intersection of two curves. Angle between two curves is defined as angle between two tangents drawn at their point of contact. दो वक्र जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और उस बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं और उन स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण बनता है, उस कोण को हम वक्रों के बीच का कोण कहते हैं. पिछले वाले वीडियोस में हमने ये काम किया है, लेकिन उस समय इक्वेशन जो थी कर्व की वो कार्टेशियन फॉर्म में थी. फर्स्ट कर्व, second curve, this is suppose C1, here it is C2, this curve is C2, and tangent, this is the tangent, first curve, and this is the tangent of second curve, and this is the angle, and this was, you remember, alpha. So its slope, that is dy by dx. This point is P, coordinates x comma y. So dy by dx of C2, second curve, and this is dy by dx of C1, that is slope. So tan alpha is dy by dx of first curve minus dy by dx of second curve upon 1 plus dy by dx of first into dy by dx of second. This we have done. And Cartesian curve, remember, f of x comma y is equal to 0. But when polar curves be given, definitely this point is r comma theta, and this is the angle psi, so you can find dy by dx. But when polar curves be given, then to find dy by dx is time consuming. So it is better to find the angle in terms of phi, the slope. So that will be easier for us, and we simplify this one. Otherwise, you can use this formula. So find dy by dx for first polar curve, find dy by dx for second polar curve, means it will be in terms of dr by d theta. Then you simplify this one. But we derive some new formula. It is in terms, it is especially for polar curves. This formula is especially for Cartesian curves. So the process will be the same. Here this angle, if you remember, see, this is psi 1, this is psi 2. Okay, so you can find this angle, and this is alpha, so definitely this is alpha. So psi 2 equals to psi 1 plus alpha. So alpha is psi 2 minus psi 1. So you can apply, therefore, tan alpha. You can find it is 10 psi 2 minus
take the modulus and you can derive this formula. So you can use this formula, slope m1 and m2, so it is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. So it is this type of situation. Okay, now we use, suppose this is phi 1 for example. I consider another curve, second curve. This is C1 and this is C2. And here is the tangent, this one. Remember the diagram is like this. So this angle is psi 2, here it is psi 2, this angle is psi 1. But we will not consider this, we consider this one. ध्यान रखना, ये जो एंगल है किसके बीच में, स्पर्श रेखा और रेडियस वेक्टर के बीच में. ये पॉइंट जो है वो है P, that is r, theta. Here this is x, y. रेडियस वेक्टर, ये पिंक वाला जो है वो रेडियस वेक्टर है. इस रेडियस वेक्टर को इस स्पर्श रेखा तक, यानी यहां से यहां तक, ये ध्यान रखना है. ये पूरा एंगल जो है, और ये पूरा एंगल जो है phi 1, और ये जो पूरा एंगल होगा that is phi 2. रेडियस वेक्टर और स्पर्श रेखा के बीच में ये रेडियस वेक्टर और ये येलो वाले पिंक रेखा, येलो वाली स्पर्श रेखा, और ये रेडियस वेक्टर सेम रेडियस वेक्टर है और ये ब्लू वाली स्पर्श रेखा. So ये एंगल phi 1 और ये phi 2, and this angle, this one, this is the tangent, here it is tangent, so this is alpha. Okay, so you can see यहां से यहां तक येलो लाइन, ब्लू लाइन, ये स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा. इन दोनों स्पर्श रेखा के बीच में एंगल कौन सा है, अल्फा. और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको मालूम है, ये एंगल यहां से यहां तक, ये और ये भी अल्फा होगा. ये अल्फा, ये अल्फा. ध्यान रखो, ये भी अल्फा है तो ये भी अल्फा है. अब डायग्राम से देखो, यहां से यहां तक ये पूरा एंगल कितना है, phi 2. तो phi 2 जो है किसके बराबर है, phi 1 और इस अल्फा के बराबर. So according to figure, किस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, phi 2 की. phi 2 एंगल यहां से यहां तक, ये किसके बराबर है, इस एंगल के बराबर, और प्लस दिस अल्फा. दिस इंप्लाइज phi 2 minus phi 1 equals to alpha. So alpha equals to phi 2 minus phi 1. बुक में सिंबल थोड़े अलग से है और यहाँ मार्किंग भी गड़बड़ दे रखी है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल, ये रेडियस वेक्टर है, ये टेंजेंट है. फाई एंगल जो है वो हमेशा रेडियस वेक्टर और स्पर्श रेखा के बीच में होगा. फाई इज ऑलवेज बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट. सो दिस इज द फर्स्ट कर्व, इट्स टेंजेंट इज इन येलो कलर. This is the second curve and its tangent is in blue color. So this angle is phi 1, this angle is phi 2. This is the angle between these two tangents, alpha. हमें alpha कैलकुलेट करना है. So ये भी alpha होगा, ये alpha किस, this phi 2 यहाँ से यहाँ तक. So it is this plus this one. This means phi 1 and this is alpha. So it is phi 1 plus alpha. So here you can say phi 1 plus alpha is phi 2. So phi 2 minus phi 1 is alpha. Therefore alpha is phi 2 minus phi 1. Therefore tan alpha is tan phi 2 minus phi 1. So we use the formula, that is tan phi 2 minus tan phi 1 upon 1 plus tan phi 2 into tan phi 1. You can use the modulus and simplify this. Okay. So this is the Cartesian. When Cartesian equations be given, polar equations be given, it is easier to use this formula because we can find dy by dx easily. It is easier to use this formula because we can find
tan phi, that is r d theta by dr straight away. But you remember, we can find this angle by using this formula, but it will be time consuming. So it is better to remember this formula for Cartesian and this formula for polar. What is tan phi to r d theta by dr for second curve, tan phi 1 r d theta by dr for first curve. Okay, so now it is not necessary that this is phi 1 and this is phi 2. आप किसी भी एंगल को इंटरचेंज कर सकते हो, बस यहाँ फर्क होगा, आपको मॉडुलस लगाना पड़ेगा. सो इफ यू टेक द मॉडुलस साइन ऑफ दिस वन just like this, then you can write this as tan phi 1 minus tan phi 2 upon 1 plus tan phi 2 into tan phi 2. This is L1 minus L2 upon 1 plus L1, where what is L1? This is tan phi 1 for C1 first curve at P r comma theta, and L2 that is tan phi 2, that is for C2 at P, that is r comma theta. Okay, and what is tan phi 1? Tan phi 1 is r d theta by dr for first curve, and tan phi 2, that is r d theta by dr for second curve. Okay, so this is the way to remember the formula. Now we consider one example on this and simplify. So you just remember, when the angle is 90 degrees between two curves, then curves are called orthogonal curves. लंब कोणीय वक्र, ये मैं पहले बता चुका हूँ. यदि आपको याद नहीं है तो इससे पहले वाला वीडियो देखिए आप, जिसमें मैंने कार्टेशियन इक्वेशंस को लेके एग्जांपल बताया कि जब दो वक्र लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो कंडीशन क्या होती है? m1 m2 इक्वल्स टू -1, मीन्स dy by dx of first curve into dy by dx of second curve इक्वल्स टू -1. और जब पैरेलल होगा तो स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे, dy by dx of first इक्वल्स टू dy by dx of second. यहां पर जो है वो फॉर्मूला हमने फाई में लिखा है, इसलिए उसी के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला ध्यान में रखें. Let us see. Find the angle of intersection. Find the angle of intersection between the curves r equals to 1 plus cos theta and r equals to one of the constant, right? 1 minus cos theta. What is this? Tan alpha L1 minus L2 upon 1 plus tan delta. यदि परपेंडिकुलर हो 1 plus L1 L2 equals to 0. ये 90 कब होगा? जब ये पूरा पार्ट इंफिनिटी हो. ये इंफिनिटी कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा, तो ये इंफिनिटी होगा. tan infinity when angle is 90 degrees. So this simple
L1, L2 equals to minus 1. Curves are orthogonal, लंबकोण. कंडीशन आपको याद रखना है. Parallel, then L1 minus L2 equals to 0. This implies L1 equals to L2. What is L1? Where L1 is tan phi 1, that is r d theta by dr for first curve, and L2 is tan phi 2 r d theta by dr for second curve. So this is the information that we have done. First is r equals to a1 plus cos theta. This implies dr by d theta is minus a sin theta. Differentiation. Therefore, L1 is r d theta by dr for first curve. So r means a times 1 plus cos theta. This is the first curve. I say into 1 upon d theta by dr. So it is minus a sin theta. Remember, here point is P, that is r comma theta. मैंने पॉइंट को r comma theta ही लिया है. आप चाहो तो थीटा 1 भी कर सकते हो. ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट नहीं किया, जनरलाइज कर रहे हैं इसको. This is minus 1 plus cos theta. I hope this is done. माइनस, कल फॉर्मूला बताया था, इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं. फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. So this is minus cot theta by 2, and this is tan phi by 2 plus theta by 2. Therefore, L1 is this, and L1 is tan phi 1. So therefore, tan phi 1 is tan phi by 2 plus theta by 2. So this implies एक्चुअली हमने सीधा एंगल कैलकुलेट कर लिया. phi 1 इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2. इट्स फाइन. सेकेंड कर्व r इक्वल्स टू b टाइम्स 1 माइनस cos थीटा. सो dr by d थीटा sin थीटा. ओके, so therefore L2 tan phi, that is r d theta by dr for second curve. What is r? b1 minus cos theta. यहाँ ध्यान रखना वैल्यूज लिखते समय, क्योंकि ये dr by d theta और यहाँ d theta by dr, so it is b sin theta. So when you simplify this, find this tan theta by 2. It will be 2 sin square theta by 2. So phi 2 is theta. It is this, and here it is phi 1. Okay, so this is alpha. So it is alpha is phi 1 minus phi 2, and what is phi 1? Phi by 2 minus theta by 2 plus theta by 2. So the answer is
So the angle between two curves is pi by 2, means curves are orthogonal. Okay. We can consider L1. L1, you can say this is L1 is alternative. Tan of phi 1 and L2 is tan of phi 2. So L1, L2 is tan phi 1, tan phi 2. What is tan phi 1? Tan phi 1. Here it is. Tan phi 1 is tan pi by 2 plus theta by 2. So this is minus cot theta by 2. Yeah. Here it is. So this is minus cot theta by 2. And tan phi 2, here are tan phi 2. Tan phi 2 आ रहा आपके पास में tan theta by 2. Cot into tan is 1, so the answer is minus 1. So perpendicular. So sometimes it is easier to look at. So this is minus cot theta by 2 and this is tan theta by 2. So the multiplication of L1 and L2 is minus 1. So angle between two curves pi by 2. तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं. इस तरह से हम दो कर्व्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. Now we consider one particular part. That part we have done in Cartesian, but today we will consider for polar curves. Look at this. Length of tangent, normal, subtangent and subnormal. स्पर्श रेखा, अभिलंब, अधर स्पर्शी एंड अधोलंब. हिंदी में स्पर्श रेखा, अभिलंब, अधर स्पर्शी एवं अधोलंब की लंबाई. कार्टेशियन को याद है? ये देखो, टेंजेंट P x, y और ये है नॉर्मल अभिलंब and x-axis and y-axis. This angle is 90. Here it is.
आपको याद होना चाहिए, हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ये पॉइंट Q, दिस इज T, दिस इज N, दिस इज Y, दिस एंगल टेंजेंट, so this is psi. याद करो, this is Y, this is psi, and here it is Y cosec psi. This side Y sec psi. This is Y tan psi. इसके दोस्त थे इसके साथ में, cosec की cot के साथ में, Y cot psi. ये स्पर्शरेखा की लंबाई, अभिलंब की लंबाई, ये इस पिंक वाले की शेडो है, ये यहां से यहां तक अधस्पर्शी, सबटेंजेंट और ये सबनॉर्मल, लेकिन किसके लिए? कार्टेशियन कर्व्स के लिए। किस फॉर्म में है ये? साई के फॉर्म में है, एंड tan psi is dy by dx. It is this for Cartesian. Now we calculate all the things when curve is polar. So polar tangent, polar normal, polar subtangent, and polar subnormal. ध्रुवीय स्पर्श रेखा, अभिलंब, ध्रुवीय अधस्पर्शी एवं ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई. So let us see. This is the curve. This is Cartesian and this is polar curves. Okay. Now this is the point I say. This is the tangent. Remember. And the normal is 90 degree. Now remember, this is the point P. यहां से लंब कहां डाला है हमने? इसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, यहां पर y कोऑर्डिनेट के लिए बात कर रहा हूं मैं. Here is suppose this is the initial line, that is O, and here it is X. OP, here it is, this OP. This is R, and this angle is theta, we know that, and this angle is phi. Okay.
P से परपेंडिकुलर इनिशियल लाइन के ऊपर, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट इसमें इंपॉर्टेंट है, सारे टर्म्स जो है वो y में लिखा है, यहाँ पर ये r इंपॉर्टेंट है, रेडियस वेक्टर। सो आई जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री बनाते हुए, ये 90 यहाँ पर, इसे यहाँ से परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये ऐसे, this is O, that is O. So this line is perpendicular to radius vector. यहां से ध्यान रखना, ये y है और ये यहाँ पर r है। टेंजेंट ने इनिशियल लाइन को कट किया है, तो जैसे यहाँ पर ये मैंने पॉइंट मार्क किया, ये यहाँ पर पॉइंट कौन सा मार्क हो रहा है, क्यू मार्क हो रहा है, जैसे वहां पर क्यू है, यहाँ पर ये क्यू है। ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, और वहां ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये ध्यान रखना है। नाउ दिस एंगल इज फाई, ये फाई है, और यहां से यहां तक ये कितना है 90। क्यों 90 है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये नॉर्मल है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द नॉर्मल इज 90, तो ये एंगल कितना आएगा, ये 90 माइनस 5, ये ऑलरेडी 90 है, इसलिए ये वाला एंगल जो आपका क्या बनेगा 5। ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ने इस लाइन को कट किया है, हमने ये स्पर्श रेखा ने इस लाइन को कट किया, तो यह पॉइंट टी है, मैं यहाँ टी मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, और वहां पर जो है पॉइंट है। अब कंपेयर करो, ये साई यहाँ पर ये बन रहा है फाई, इसी तरह से ये है आर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये क्या बन जाएगा y cos x है। अब आप इजीली ट्रिग्नोमेट्री से देख सकते हो, y cot psi मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये क्या बन जाएगा, सॉरी क्योंकि एंगल फाई है, यस ई फाई, ये tan फाई, और ये वाला पार्ट जो आपका बनेगा y sec फाई। लेकिन ध्यान रखना है ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट का लेंथ इसमें y sec फाई हुआ, वहां रिवर्स हो गया है, वहां पर ये नॉर्मल का काम कर रहा है, यहाँ पर ये टेंजेंट का काम कर रहा है। ये नॉर्मल की लेंथ है, दैट इज y cosec फाई, ये सबनॉर्मल और ये सबटेंजेंट है। ओके, सो यू जस्ट हैव अ लुक इन दीज टू डायग्राम्स, कुछ नहीं करना, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है लेकिन y कोऑर्डिनेट के, यहाँ पर रेडियस वेक्टर के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि ये r है, रेडियस वेक्टर के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, जहां उसने टेंजेंट को कट किया वहां पर n मार्क किया, जहां नॉर्मल को कट किया वहां पर मैंने t मार्क किया। सो दिस इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, जस्ट द रिवर्स ऑफ दिस वन, जहां टेंजेंट की लेंथ बन रही है वहां यहाँ पर नॉर्मल की लेंथ बन रही है, बाकी सारी बातें एक जैसी है। यहाँ पर फॉर्मूला किसके टर्म्स में, साई के टर्म्स में, यहाँ सारे फॉर्मूले किसके टर्म्स में, फाई के टर्म्स में। ओके, सो इट इज दिस। Let us consider one example. Find the length of subtangent of the curve L upon r equals 1 plus e cos theta at any point. Find the length of subtangent of the curve L by r equals 1 plus e cos theta at any point. Now, equation of the curve is in polar form, and subtangent you can see. This is the subtangent. Length of
subtangent is y tan phi. This is y. What is tan phi? That is r d theta by dr. And here it is not y. Sorry, this is in terms of r. It is r. Oh. Okay, so this is r cosec because this is r here. This is r. Here it is also r, and this is r. Okay, so it is r tan phi. R tan phi means r d theta by dr. So this is r square d theta by dr. Now L upon r equals to 1 plus e cos theta. So on differentiating with respect to theta. So L is constant, differentiation of 1 by r is minus 1 upon r square dr by dr equals to minus e sin theta. Okay, so we place the values r square. So this negative and negative is positive. So it is e r square. So it is e r square sin theta upon reverse part of this one. Okay, so this is L upon this. So this and this cancelled out. We are getting L upon e sin theta. So length of subtangent is given by this particular L by e sin theta. And suppose theta is given. Suppose I say find the length of subtangent of the curve this at any point. Then this is the formula. But if I say at point theta equals to pi by 6, then you write theta as pi by 6. Then you can find the answer particular one. Okay, so if I change at point theta equals to pi by 6, then it will be L by r sin pi by 6. So it is L upon 2e. This is the answer, 1 by 2 and e. Remember, this is the equation of conic, parabola, ellipse or hyperbola. So if e is 1, then it will be parabola and so on. So today we have completed length of polar tangent, length of polar normal, polar subtangent and polar subnormal. This is the way to remember the diagram with respect to Cartesian and polar also. And we have defined angle between two curves. If angle between two curves be 90 degrees, then curves are orthogonal. So I hope you have understood all the concepts. If you have difficulties, then you just comment in the comment box. Thank you very much. Jai Hind.